Topic is the circulatory system. Here we discuss what is a circulatory system. As the name indicates, the flow of blood is called as a circulatory system. Blood is used to transport various substances from one part of the body to another by flowing continuously around the body. और ब्लड जो है वो फ्लो होगा इन द बॉडी और उसके जो फ्लो ऑफ ब्लड है इट विल कॉज स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू another part of the body. The blood flows through a cross system of blood vessels called a circulatory system और flow of blood जो है it is called as a circulatory system. Flow of blood through a cross system by blood vessels is called as circulatory system. Here we again define a circulatory system is considered a cross system. It is considered a cross system because blood remains in the blood vessels, heart, arteries, capillaries, veins and back to heart and only nutrient, gases and wastes are exchanged at the capillaries. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम जब इस सिस्टम को देखें तो हमें इसमें वी कैन सी वन इज़ अ हार्ट, other one are the arteries, veins as well as capillaries. These are the things which form the circulatory system. और एंड बैक टू हार्ट और जो ब्लड है बिकॉज ब्लड रिमेन्स इन द ब्लड वेसल, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स एंड बैक टू हार्ट एंड ओनली न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वेस्टेज आर एक्सचेंज एट द कैपिलरीज एंड दिस इज कॉल्ड एज अ this is a function of heart, arteries and veins to carry on the blood and this is the circulatory system. Here we see circulatory system is responsible for transporting materials throughout the entire body. कि इसका काम जो है ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि it will transport the materials throughout the body, कि पूरी बॉडी में जो है जो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होंगे. It transports nutrients, water and oxygen to all billions of body cells and carries away waste such as carbon dioxide in body cell. Then nutrients को ट्रांसपोर्ट होंगे, न्यूट्रिएंट्स विल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर ऑफ बिलियंस ऑफ बॉडी सेल एंड कैरीज अवे वेस्ट सच एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट जो है वो बॉडी सेल से जो है वो एक्सपेल होगी. और दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी. सेकेंड वन, एंड इट इज़ एन अमेजिंग highway that travels through your entire body connecting all the body cell. और दिस इज अ सिस्टम विच जो ब्लड का फ्लो होगा विच कैरी द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर एज और एज आउटसाइड द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करेगा, और वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में पूरी सिस्टम में जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगी. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज आप जो पूरे जो है इज़ कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The blood vessels which carry blood away from the heart, जो ब्लड को जो है वो हार्ट से कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एज arteries. The large artery that leaves the left side of the heart is the aorta.
और इसमें जो लार्ज साइज की आर्टरी होती है इट्स कॉल्ड एज एरियोटा। It branches to form smaller arteries और these arteries branch again to form tiny arteries called arterioles। और ये arteries जो हैं वो डिवाइड होके small network of arteries बना देती हैं और these are called as arterioles। The arterioles divide and ultimately their branches become very tiny blood vessels called capillaries। और the arterioles जो हैं these will give rise the capillaries। यानी ब्लड जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो कैपिलरी जो हैं जो ब्लड को हार्ट से फासले दूर अवे लेके जाती हैं दीज और कॉल्ड है दिस नेटवर्क इज कॉल्ड आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके और जो कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट और लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है इट्स कॉल्ड एज एरियोटा। और ये आर्टरी जो है वे डिवाइड इंटू अ नेटवर्क और स्मॉल आर्टरीज और दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज ताकि तमाम बॉडी में जो है ब्लड की सप्लाई हो सके। और दीज आर्टरीज देन अगेन फॉर्म द कैपिलरीज। ये स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। कैपिलरीज Capillaries are microscopic blood vessels that are found between the cells of almost all the tissues। Capillaries तमाम body cells में पाई जाती हैं। They have walls made up of only a single layer of flattened cell called endothelium। और इनकी जो walls हैं ये endothelium से जो हैं बनी होती हैं। The endothelium is selectively permeable। Capillaries branch repeatedly from the numerous branches provide a large surface area for the exchange of substances between the blood and the tissue cell। और ये जो है capillary this is useful exchange this is helpful to exchange this is helpful to capillaries branch repeatedly and the numerous branches provide a large surface area for the cells capillaries। Capillaries are microscopic blood vessels that are found between the cells of almost all the tissues। They have walls made up of only a single layer of flattened cell which are called as endothelium। Capillaries की जो walls हैं they are made up of endothelium। The endothelium is selectively permeable। और जो endothelium है it is a selectively permeable होगा। It enables the substances to diffuse quickly throughout the capillary walls। Capillaries branch repeatedly and numerous branches provide a large surface area। और ये जो है capillaries की wall जो हैं they provide a large surface area for the exchange of substances between the blood and the tissue cells। Exchange of substances between the blood and the tissue cells। Capillary branch repeatedly and the numerous branches provide a large surface area for the exchange of substances between the blood and the tissue cells। यानी कि कैपिलरी जो हैं वो उनकी जो walls हैं इट्स मेड अप ऑफ द एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है यानी कि इसमें से जो है इट विल कैपिलरी ब्रांच रिपीटेडली एंड न्यूमरस ब्रांचेस प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ब्रांच सब्सटेंसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स। और इसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स
इसमें अगर बात की जाए सबसे पहले वो टेक द हार्ट। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच ड्राइव्स द ब्लड अराउंड दी होल बॉडी, इसकी वजह से पूरे जिस्म में जो है खून की सप्लाई होती है। सेकंड वर्ड ऑल दी आर्टरीज। Now what are arteries? These are the blood vessels which carry the blood away from the heart, जो blood को जो है वो away from the heart। Next one are the veins which carry the these are the blood vessels which convey blood towards the heart। Towards heart। And next is all the capillaries। Capillary, these are the microscopic thin-walled one cell thick blood vessels which carry blood from a small arteriole to a small venule। These are the blood vessels which transport the blood, which carry blood from a small arteries to a small veins। Semilunar valves। Semilunar valves are heart valves consisting of cusps that prevent the blood backflow। यानी सेमिनल valves वो होते हैं जो कि ब्लड को जो है वापस जाने से रोकते हैं, prevent the backward flow of blood as we can see here। And aortic semilunar valves or primarily semilunar valves, here we can see the two type of semilunar valves we can see aortic valves as well as pulmonary valves, and these are called as a semilunar valves because they shape like a half moon। They are shaped like a half moon, so these are called as semilunar valves, and these are of two types, aortic valves as we can see in this picture, and second one is a pulmonary valves as we can see in the other picture, and these prevent the backward flow of the blood। These prevent the backward flow of blood, यानी ब्लड को जो है वापस जाने से उसके बैकवर्ड फ्लो को जो है वो रोकेंगे और ब्लड जो है पुश होके आगे की तरफ बॉडी में जो है उसकी सप्लाई जाएगी। Here is the comparison between the veins and the arteries। Veins carry blood from tissues of the body to the heart, यानी वेन जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएंगी, जबकि arteries carry blood back away from the heart to the tissues of the body, जबकि आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से बॉडी टिश्यूज की तरफ लेके आती हैं। are found closer beneath the skin। Arteries are found close beneath the skin, जबकि found deeper within the body। Veins are less muscular than the arteries और arteries are more muscular than the veins। एंड वेन जो होती हैं क्रैप्स, ब्लड फ्लो स्टॉप्स, कि अगर ब्लड फ्लो जो है स्टॉप्स हो जाए तो वेन्स आर क्रैप्स यानी ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। क्रैप्स मीन दे विल बी डेड। और आर्टरीज वुड जर्नली रिमेन्स ओपन इवन इन फ्लो स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द मस्कुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज इनमें ज़्यादा मस्कुलर होती है, ज़्यादा यानी कि थिक होती हैं। डेट्स वाई कि अगर ब्लड फ्लो स्टॉप भी हो जाएगा तो फिर भी वो जो है दे डजंट क्रैप्स। Here we can see comparison in between arteries and veins। Veins move towards the heart and arteries move away from the heart। Veins collect blood from body organs or arteries distribute blood to the body organs। Veins blood pressure in veins is low or blood pressure in arteries is high। Valves are present in veins and valves are absent in arteries। कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द प्लोमरी वेन। अब प्लोमरी वेन जो है ये एक डिफरेंट है कि इसमें सब जो होंगी वेन ये कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, यानी कि वो जो प्योरीफाइड ब्लड नहीं होगा उसको लेके जाएंगी, एक्सेप्ट प्लोमरी वेन्स।
एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट प्लमोनरी आर्टरीज। प्लमोनरी वेन्स और प्लमोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन केस हैं। बाकी जो है वो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, जबकि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके कैरी करके लेके जाती हैं। यानी कि वो जो डीऑक्सीजनेट का मतलब है कि वो ब्लड जो कि प्योरीफाई नहीं होता, जो कि इम्प्योरीफाई होता है, प्योर नहीं होता। Veins start in the blood capillaries, arteries and vena capillaries. Veins, they can be seen subcutaneously or they are deep seated. They collapse when there is no blood in it or cut across. They do not collapse when there is no blood in it. Veins are further divided into venules. Veins जो है फर्दर स्मॉल वेन्स में डिवाइड होती हैं जिनको venules कहते हैं. Arteries are further divided into arterioles. Veins are usually flattened or collapse when with thin wall. वेन्स की वॉल जो है थिन होती हैं, जबकि जो आर्टरीज हैं दे आर राउंड एंड थिक वॉल्ड. वेन्स हैव लार्ज ल्यूमन. वेन्स का जो स्पेस है एरिया जो है ल्यूमन जो है उसका वाइड होता है, जबकि आर्टरीज हैव अ स्मॉल ल्यूमन. वेन्स आर ब्लूइश इन कलर. वेन्स ब्लू कलर की होती हैं. आर्टरीज आर रेडिश इन कलर. Veins show the sluggish movement of blood or arteries show the spurtory movement of blood giving pulse. The venous these are some difference in between a vein and arteries. इसमें सिर्फ एक प्लमोनरी वेन और प्लमोनरी आर्टरी का डिफरेंस है, बाकी तमाम वेन और आर्टरीज के फंक्शन जो हैं वो एक से ही हैं. Really the circulatory system which is discussed here. Which is composed of arteries and veins. Pulmonary arteries carry the oxygen poor blood, then it will carry the deoxygenated blood, and pulmonary veins carry the distressed oxygenated blood. यानी pulmonary vein जो है it will carry the oxygenated blood, and pulmonary arteries these will carry the deoxygenated blood, and these both are found in the heart. Here we can see the picture of heart. That is the pulmonary vein. That is the pulmonary vein which is carry the distressed oxygenated blood, and that is pulmonary arteries which is can we see in the blue in color carry the deoxygenated and oxygenated poor blood. Yani vein is carrying the blood from the heart to the body, and arteries is carrying from the body to the heart. Here we can see. Here is the difference in between arteries and the vein. These are the arteries, and on the other hand we can see a veins. Arteries are carrying the oxygenated blood, the blood which is rich in the oxygen, and the veins are carrying the deoxygenated blood, the blood which have the less oxygen, rich in oxygen. Less oxygen.